everyone, this is Madhu Saini along with another good new lecture of Indian Penal Code 1860. Today, in continuance of our previous lecture, let us have a new topic, a new lecture along with a new chapter of Indian Penal Code. The topic says punishments. Chapter 3rd of Indian Penal Code consists of the topic of punishments. It says it is an enumeration, it's a compilation of sections starting from section 53 to section 75 of Indian Penal Code. 53 is more exhaustive. 53 defines as to what all type of punishments have been enumerated, have been reproduced by our legislators herein. Section 53. What is section 53? Let us have a running glance over it. It speaks punishments. The punishment to which offenders are liable under the provisions of this code are. So, if you have violated law, then you are liable for the punishment because violation of law is an offense. Punishment may be of any kind. What all punishments have been provided by our legislators in Indian Penal Code have been defined herein. When you appear for judiciary, you have short questions on punishments. For example, what if you have been reprimanded in the course of your duty? For example, what if you have failed to deposit the required fine? What if, how much punishment will you undergo in failure of fine? Will that punishment be in addition to the sentence already undergone? Second, will that punishment be simple or will it be a rigorous imprisonment? So secondly, in continuation of it, how many days can a court give you maximum punishment for specific kind of offences, which all respective courts have jurisdiction to try. For example, not really going into it right now, whether a magistrate or a sessions judge will try a case which is punishable of 10 years or more. Needless to say, it shall be tried by the courts of sessions. One thing. Second thing, but for that you need to understand what is the offense, what is the nature of the offense. Secondly, what quantum of punishment shall be granted herein. We have punishments, number of punishments. There are punishments which are not specifically mentioned. There is no passing reference, there is no averment in section 53, but still we have punishments. We have punishments of the way I discussed in my previous class, which was TRC, till rising of the court. It speaks of so you as a violator of law, court can also make you stand in the court till it rises. When we say rises, the time of the court rising of a court is 5 p.m. generally. So that is also a punishment. Imposition of fine is a punishment. Undergoing imprisonment along with imposition of fine is a punishment. This all we shall have. Let us first have what is section 53 all about. 53 says, first, death punishment. What is a death punishment? In what circumstances a death punishment can be awarded? That we shall have at length in section 53. We shall also have certain judgments which were of a great debate, wherein our legislatures, our jurists, our judicial activists, our legal our officers of the court, that is the lawyers, participated.
whether death punishment should be permissible as per the provisions of Indian Penal Code. Isn't it really beyond the purview of a human being to give a punishment or to punish another human being that his life should be ended, he should die? Is it a human being who can do so? Otherwise, you may be whosoever you are, you may be the highest court of the country, you may be a sessions court, you may have ample powers, but still it is the God only who makes the other person die. He may choose the convenient time, the convenient place, the convenient circumstances. So you cannot make somebody die. Then, is death a deterrent? Needless to say, we all want to live. We all want to live as much as long we can. So certainly the fear of death can set an example for others, wherein if you do such and such offense, which may certainly be a heinous offense, then you have or you may be sentenced to death. So, is a human being, are we having that power? Should a human being, certainly under the color of the duty, he is not just a human being. He is there to decide the fate, decide the future of two persons. One person who has been subject to victimize, who is a victim, who has been victimized by whom? Accused or accused. Can you do so? So, if by giving a death punishment, are you really not being a deterrent to teach lessons to others or to teach lesson to others who may in any eventuality think of committing similar kind of crime? After debates, we will certainly have number of cases on it. It was decided that in rare of the rarest, this is the term which is still being discussed, which is still being followed, enumerated in our judicial process, that the case which falls under the purview, the category of being a rare of the rarest case, shall be awarded with a death punishment. For example, when I believe many of you must not even be born, there was this case of Billa Ranga. This was a case which shook the entire mankind, which shook the humanity to its core, to its very roots, which certainly shook the nation. A brother and a sister heading towards school for getting some award, some prize, super excited. A family from a defense background. This is of those who really belong to Delhi must be knowing this was all about that Delhi Gurgaon road, that very park that was very isolated those days, and they caught hold of the girl. They gang raped her brutally, and they cut the brother and the sister into pieces. Finally, there was a case, there was a registration of FIR, and it was made out that it were these two persons who were to be caught for this commission of this offense. They were caught when they were trying to evade in a train, and this was, to the best of my memory, though I will certainly update you in the next lecture, the only case in the judicial history of our nation which really permitted the parents of the deceased children to witness the hanging of the accused, that was Billa and Ranga.
So you can understand the pain that certainly the kids will not come back, and this was the only case. As I said, I may stand corrected, and if it is so, I shall certainly update you, I shall certainly correct myself. So this was rare of the rarest cases. This was the heinous case, and I am not quoting a book. Sometime I was reading some article when I was myself a school going child. Ranga asked the butcher, what do I do if I really have to prevent myself from the maximum pain? It is said, it is believed, it is a presumption because nobody can be a witness to it, certainly. They say he was advised to hold his breath while he is being hanged. So the fear of being hanged, the fear of death is so painful, so deterring, that it may really leave a lesson, it may really teach a lesson. It may be a fear to all others who look forward, who are into all such offences, who get inspired by many criminal thrillers, crime thriller series. So herein, looking at Bilaranga, there are instances more like that we may agree, we may arrive at a consensus that certainly death punishment is required at times. Imprisonment for life, again we will have a detailed discussion on it. First we will have nature characteristics. Imprisonment of life is another part of punishment under section 53. Third part stands repealed. We will not go into it, what was earlier before being repealed. Fourth speaks of imprisonment. Imprisonment, needless to say, is either rigorous or simple. Rigorous shall include some hard labor. Simple, and then fifth is forfeiture of property. Fifth is forfeiture of property, and sixth is a fine. First, before we define to some extent these parts, what is section 53? Let us come back to the place from where we actually started. 53 speaks of various kinds of punishments to which offenders are liable. Liable herein infers liable to undergo. First, let us make it very clear, the section 53 is itself not exhaustive. It also amounts to certain exceptions herein. For example, there may be certain punishments which can be awarded, which may be more prevailed upon under the certain local law or a special law of the statute in question therein. So what we understand, that section 53 is not just exhaustive. You may have certain other references, you may have certain other special provisions of local or special law to which section 53 shall be subject to. Going further, the sentences should not be disproportionately severe. Let us just interpret the term disproportionately severe. What is a disproportionately severe herein? Let us have two instances. First instance was a man who was a conductor of a private school bus, drives negligently, rashly, due to which one of the school going child, a student, dies. Certainly he is imprisonment. Thereafter he is granted bail. Now he undergoes a trial, imprisonment plus bail, for nearly, I would say,
23 years. At the time of judgment, his age is somewhere around 74 years. So if we minus 74 minus 23, 1, 5. So at that very relevant point of time, he was 51 years. Already undergone trial, and after judgment wherein the court upholds that he is guilty. There is another step which says order on sentence or quantum of sentence. Court realizes that he has been imprisoned or he has undergone punishment, though at a later stage he was awarded punishment. Court realizes while passing the order on sentence that he is at a juncture, at a phase of his life where he has already undergone a number of things. What is number of things? He lost his job. No other school really put him on their payrolls due to his criminal history of this very case. He was followed by a surviving wife who was bedridden. So court said that he shall be awarded to such and such imprisonment, and if not so, this fine. So if this fails, there shall be a fine. You go into appeal herein. You realize it shall take time. You go into revision. No, you will not. Simply because you are challenging the order herein, and the appellate court, while the appeal is being decided, this man turns to be 78. Unfortunately, it is not so these days. These were the days when we had lesser judicial officers, lots of work to do. Now we have bulk of officers coming. We have speedy trials. We have such directions by apex court and honorable high courts, wherein we really cannot keep the old matters pending. Court says that at this age I am commuting the sentence to till rising of the court, and thereafter the matter stands closed. Is it disproportionate to my knowledge, to my acumen, to my prudence? No, it is not. Undergoing a trial for more than 2 decades is already undergoing a pain and harassment where it is yet to be decided you are innocent or you are a guilty person. Second, you undergo pains, you lose your job, you starve, you knock from one door to another door for your survival, and there comes a phase when life and death, you are at a verge that you just don't know what is going to be a second time. To me, this punishment was not disproportionate, and this severe term is not applicable here, so we are not discussing it. Coming to another case herein, a case wherein there is an FIR of 468, 471, ex obis B, 34 IPC, and many more. Someone is looted to a tune of 29 crores. The complainant herein
is an individual, right? There is an economic offences wing. It refers the matter to the Thana concerned. There is an FIR. There is a charge sheet, and certainly the accused is arrested, along with whom? All his accomplices. एक उनमें होते हैं जो कि स्टैम्प बनाते हैं, स्टैम्प ऑफ रजिस्ट्रार, स्टैम्प ऑफ दिस ऑफिसर, दैट ऑफिसर, टू रजिस्टर द प्रॉपर्टी. This man is shown number of properties in Delhi NCR, not in Delhi, I'm sorry, because he himself came from Delhi, no, not from Delhi, in NCR, Greater Noida, Jaipur, etc. And those properties, there is a documentation, there is a registry, there are witnesses. Witnesses are being clicked. And certainly there is stamping. So it's a complete gang of such expert criminals, and I myself met this prime accused. If you see him, you find him one of the finest gentlemen on this earth. Perfectly fine with his lucids, perfectly fine with the technology, perfectly fine with the manners, the etiquettes, and certainly perfectly fine with the art of fooling people. Certainly this man who happened to be my client became his victim for his own forthcoming leisures. Now, before the Delhi High Court, he makes a statement that within 1 month to 45 days, he will give the first check. And the check shall be not less than 5 crores. He gives a check, checks get dishonored. So you have another court to take cognizance, जिसे हम बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला कोर्ट, जहाँ पे आम भाषा में हम कहते हैं कि चेक डिसऑनर होता है तो इन जज साहब के पास जाता है. इन continuous many more checks, 1.5 crore to number of checks, means the checks of about 12 crores were given, all got dishonored. Now there are two things which you need to understand after listening very carefully. पहली बात, can the negotiable instrument judge या magistrate साहब award a very serious punishment, for example, of more than what is in NI Act? One part. Second part, the session court, where the accused appears. Makes another statement and disobeys the statement. Can either of the court pass a very strong observation? First, NI court cannot, because it's a special law, it's a specific law which deals with instruments. A session court before whom a matter is triable, even while hearing the bail, pass a strict observation of violating the undertaking made before the Honorable High Court and the Session Court. His anticipatory was cancelled.
After long 3.5 years, I would say, he was arrested. His regular was cancelled with a specific observation that he is in a habit of violating law after looting people. There may be a probability that after the conclusion of trial, court may pass the highest sentence, but that sentence shall not be under what is there in 468, 71, 467, 120B and 506 IPC. Right? You can certainly award a very high number of fine, but nothing more than that. Am I clear? So what I'm trying to say is, there should be, yes, if at the time of bail, this man is asked to stand till TRC, or at the time of judgment, he is asked to undergo TRC, then the sentence is badly disproportionate. Am I understood herein? So this is what we call it, severely disproportionate. Going in furtherance of it, let us see our next part of the same. Next part speaks of should not be lenient so as to fail its purpose. Again, as said by me, हम लोग यही देख लेते हैं दीपक गोयल का केस. आपने यहाँ तक कि the bank before which the property was kept as or mortgaged, the managers were also suspended, hopefully by now terminated. In such cases, when bank also became a complainant, can the court just say, okay, fine, he has no money now, let him deposit 20,000, or let all the accused deposit 10,000, and simply he's become bankrupt. So sentence shouldn't be lenient. If it is lenient, then the entire purpose of holding the trial of the penal law stands defeated at the very basis itself, right? Let us have certain examples with case laws. Accused is a government servant losing his service consequent on the conviction, और उसके बाद उसको पेंशनरी बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं. तो क्या ऐसे हालात में जो उसका ऑर्डर ऑन सेंटेंस है उसको कह देना कि जो उसने सज़ा भुगत ली वो काफ़ी है, क्या ये सही होगा? हाँ, ये सही होगा, क्योंकि वो अपनी नौकरी गंवा चुका है, वो उसको जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलनी थी वो गंवा चुका है. इसीलिए दिस वुड बी अ सफिशिएंट पनिशमेंट फॉर द एक्यूज हियरिन as held by the Supreme Court in K. Duraiswamy versus State of Tamil Nadu in 1982. Age. Can age be a important or a significant factor? Certainly it is. Looking at the age of the accused as held by the court, 17 साल की उम्र में उसको डेथ सेंटेंस मिला, and reducing that death sentence into life imprisonment is an appropriate punishment under section 53, because at this tender age he committed a crime. Let him undergo life imprisonment so that he realizes throughout his life, others are taught inside the jail and outside the jail कि अगर इस उम्र में भी ये गुनाह किया गया तो ऐसी सज़ा मिलेगी. So converting or commuting death sentence into a life imprisonment sentence, provided the age is the only factor to be taken into consideration of the accused herein, shall be appropriate a sentence under the definition of sentences of our this concerned chapter. This was held in Ujagar Singh. One more important thing, hopefully we shall discuss the facts of Ujagar Singh in our next class, because I want you to know what were the observations of a trial court, what were the observations of High Court, and then finally the Supreme Court of India.
what were the inputs, what were the ratio decidendi herein. You all should know that what was the exact interpretation of different courts at different junctures. Coming further, it is a duty of every court to see in every case that a proper sentence is being awarded. वो proper sentence award क्या है? Nature of offense. मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ. Antecedents. The conclusion of trial is a big step. I am just giving the importance of this term antecedent just at the time of bail. ये bail आपकी anticipatory हो या regular हो. Whenever you argue before the court, why I am saying bail? Because bail has nothing to do on merits. Bail has nothing to do with trial. Bail just a court has to see what is the exercise of judicious discretion. आप जज साहब को कहते हैं जनाब this is only case. He has no criminal antecedents. Court says okay, I you to file a SR या फिर इसके बाद क्या होगा? आईओ बोलेगा history of cases pending against him 1, 2, 3 convicted, acquitted, discharge, pending और सबसे ऊपर अंडर सेक्शन किस किस धारा में इसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज था. ये तो हो सकता है एक एग्जाम्पल. द अदर एग्जाम्पल कुड बी दैट IO may come up with a clean status report saying that he has no history as far. Why am I discussing this term antecedent with you? Because that is the nature of the accused, nature of the criminal. If you are a habitual criminal, you cannot be at parity with others who are first time criminals who become criminal by circumstances that certainly the trial will decide. So antecedent really plays a vital role. Psychological unwell, that is again the nature. You are not understanding the nature of act which is done by you herein. So what we discuss, the manner in which it was committed. When we say manner in which it was committed, meaning हालात क्या थे? क्या वो प्रोवोक हुआ था? हालात क्या थे? क्या वो प्रोवोक हुआ था? क्या वो डिफेंसिव था? क्या वो एक हैश्ड कॉन्स्पिरेसी थी? राइट? सो दिस इज एंड द सर्कमस्टांसेस. मैं आपको थोड़ा सा सर्कमस्टांसेस के बारे में डिस्कस करूंगी एंड देन आफ्टर विल गो फर्दर. चेंज ऑफ सर्कमस्टांस. The time when the offense was committed, there was different circumstance. The time when you are asking for bail is a different circumstance, and the time when order is passed on sentence. You become a better person. You get purified in the jail itself. So circumstances, the manner, the nature of accused, and certainly his antecedents play a very vital role when a punishment is awarded. This was awarded, this was discussed, this was an observation by the Honorable Supreme Court of India in State of Punjab versus Man Singh. So we were discussing the circumstances, the manner, the nature while awarding a punishment by the Honorable Court concerned. This was observed by the court in State of Punjab versus Man Singh.
हालात, आपकी मानसिकता, आपका व्यवहार, ये सब डिसाइड करेंगे कि सेंटेंस क्या होगा। वाइल टोटलिटी ऑफ फैक्टर्स क्या होता है? टोटलिटी ऑफ फैक्टर्स मीन्स सब कुछ देखना है। क्या ये ऐसा एक एक्यूज्ड है कि अगर इसको रिहा कर दिया गया ट्रायल के टाइम, ये गवाहों को मैनिपुलेट करा लेगा, गवाहों को डराएगा धमकाएगा, या जो वेपन यूज हुए हैं या जो एविडेंस रहा है उसको ख़त्म कर देगा? इसका व्यवहार कैसा है, इसका कंडक्ट कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, इफ़ एट ऑल ही हैज़ अ क्रिमिनल हिस्ट्री, इफ़ यस व्हाट वाज इट, इफ़ एट ऑल वो पहले जेल में रह चुका है तो उसका व्यवहार कैसा था। टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन जब कोर्ट एक सेंटेंस अवार्ड करता है। कोर्ट ने ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा अशोक कुमार वर्सेस स्टेट में 1980 में। While passing the sentence, court has to consider totality of factors bearing on the offence and the offender and award a punishment which will promote effectively punitive object of the law of the deterrence and habilitation. अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉज होते हैं। अब तक हमने ये समझा कि कोर्ट को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए जब कोर्ट एक सेंटेंस ऑफ ऑन पनिशमेंट पास करता है। अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इज अ नेचर ऑफ पनिशमेंट? पनिशमेंट का नेचर क्या है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। गोइंग फर्दर इन सफरिंग इन पर्सन और प्रॉपर्टी। सफरिंग इन पर्सन से तो हम समझते हैं कि आपको सज़ा मिलती है और सज़ा किसी किसी तरह की हो सकती है। प्रॉपर्टी, इसके लिए आज मेरे कहने से आप सब लोग सेक्शन 82 CRPC, सेक्शन 83 CRPC, आमूमन हम इसे आम भाषा में कहते हैं 82-83 की कार्रवाई हो गई। वाई आई एम सेइंग सो? क्योंकि ये पनिशमेंट इन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी का एक रूप है। आप इसको पढ़कर ये समझ पाएंगे कि क्या अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक पार्ट ऑफ पनिशमेंट हो सकता है। 82-83 की कार्रवाई हमें ये बताती है कि क्या पनिशमेंट क्वा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है। तो दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ पनिशमेंट qua property. Let us go. Certainly I'll discuss it with you, but you should yourself know a significant part of it by a bare perusal. एक bare reading भी आपको समझा देगी। Suffering in person or suffering in property inflicted by the society on the offender who is adjudged of crime under the law. Now जब हम नेचर ऑफ पनिशमेंट डिस्कस कर रहे हैं तो ये नेचर ऑफ पनिशमेंट सिर्फ इंडियन पीनल कोड के दायरे में नहीं आता है। इससे कई बार समाज आपका बायकॉट कर देता है, तो वो भी एक पनिशमेंट है। आपको कुछ सहूलियतों से बेदखल कर देना भी एक पनिशमेंट है। पनिशमेंट एक रिट्रीब्यूशन है, रिट्रीब्यूट करना, रिट्रीब्यूट देना, कि अगर आपने इन कानूनों का, इन नियमों का उल्लंघन किया तो आपको ये सब सज़ा भुगतनी पड़ेगी ताकि समाज में शांति और सुकून कायम रहे। Administration of punishment involves the intention to produce some kind of pain. Produce some kind of pain. ये जो पेन है इट में फिजिकल भी हो सकता है। व्हेन आई से फिजिकल, आपको हार्ड अंडरगो होना पड़ जाए इसी रिगरस इम्प्रिजनमेंट के। पहले ये पेन होता था म्यूटेशन का, रिट्रीब्यूशन में आई फॉर एन आई, टूथ फॉर एन टूथ का। इट कैन बी मेंटल ऑल्सो। मेंटल से यहाँ मेरा मतलब ये है कि आपको कुछ अधिकारों से दूर कर दिया जाए जिनको आप प्रयोग नहीं कर सकते। दैट इज अ मेंटल पनिशमेंट। ड्यूरिंग द ट्रायल यू आर सस्पेंडेड, यू आर अ टीचर, दैट इज अ मेंटल पनिशमेंट ओनली फॉर दोज हु आर सर्टेनली नॉट
actually guilty of it. Amount of pain actually experienced may by the offender vary from case to case, depending on circumstances and personality of the offender. दर्द, तकलीफ किस हद तक आपको महसूस होती है ये डिपेंड करता है पहली बात केस पर, फिर हालात पर, फिर आपके व्यक्तित्व पर किस तरह से। Circumstance, personality and case to case. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सर एक केस है जिसमें आपको सज़ा मिल रही है फॉर आई वुड से हाइडिंग स्टोलन प्रॉपर्टी। या एक केस है जिसमें आपको सज़ा मिल रही है 107, 151 CRPC के तहत। दूसरा केस है जिसमें आपको 376D की सज़ा मिल रही है। दोनों सज़ाएं अलग होंगी निश्चित रूप से। पर्सनालिटी, यहाँ पे मैं आपसे एक केस डिस्कस करूंगी। There was this businessman, a well-educated scientist, in fact, I would say, who gave up his government job, established his own business, lab के equipments वगैरह बनाने का। He was framed for rape of his minor helpmate. He underwent an imprisonment of 109 or 11 days. He was completely a shattered, a broken person. मैं पर्सनालिटी का यहाँ जिक्र आपसे इसलिए कर रही हूँ कि आपने एक जीवन बिता दिया, आपके परिवार हैं, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी संतान है, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको किसी भी मुकदमे में घसीटा गया, वो भी इस हद तक कि आपका लगातार बलात्कार आप करते रहे एक छोटी सी माइनर अपनी हेल्पमेड का। ये आपको जो सज़ा मिलेगी वो बहुत ज़्यादा आपको लगेगी बजाय उस इंसान के जो कि कभी ना कभी किसी न किसी ऑफेंस में रहा हो। For him, he will not undergo the same pain which you are undergoing even during the trial, though at a later stage you are acquitted. Circumstance, halat. I will another discuss an example. This is a case of juveniles. While they were in reform house, कुछ समय के बाद में घर में किसी का इंतकाल हो जाता है और उसको ए है जो जुवेनाइल, जिस जुवेनाइल है उसको फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days घर भेज दिया जाता है फॉर परफॉर्मिंग लास्ट राइट्स। Along with prayer rites. Now what this A does, जिस another juvenile Z की शिकायत पे, they came from a family, from a caste who were habitual criminals. He goes to Z, he falls into the feet of his mother and he repents and he says कि आंटी जो हो गया सो हो गया, मुझे उससे मिलना है, मैं सब शिकवे गिले दूर करना चाहता हूँ, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। When Z comes, he was already carrying punches in both of his hands, that लोहे वाला punch, sharpened knife, and he actually kills Z, throws his body
in a nala, and by that time he is a major. Circumstances are different. You are already into such circumstances. Circumstance of somebody who was a school-going child who was in the reform house for the first time would totally be different. So these three factors are totally contrastive, totally opposite, from person to person, fact to fact, personality to personality, and case to case. So herein, court has to be very specific while awarding a punishment in any such case. It is undisputable that pain in some form is always felt in punishment. Undisputedly, when you undergo a punishment, you feel pain. Some kind of pain you certainly feel, क्योंकि अगर आपको फाइन लगा है, a small thing not coming out of penal code, you're imposed fine for unnecessary delay and laches, वो 25,000 का जो फाइन है, या फिर आपके गवाह नहीं आ रहे हैं ट्रायल के दौरान, 50,000 का जो फाइन है, वो बहुत तकलीफदेह होता है. इसकी दो वजह हैं. एक तो बेवजह आपके यहाँ से पैसा गया. सेकेंडली, जुडिशियल ऑर्डर शीट में ये आ जाता है कि आपका तो एक कंडक्ट है, आप कोर्ट ट्रायल को सीरियसली नहीं लेते हैं और आप आमूमन फाइन आप पर लगता है, फिर भी आपके व्यवहार में ये सब मैटर करता है. एंड ये सब एक तरह से दर्द है which is a part of a punishment. I am not discovering the other rigor parts of it, जिसमें हम seriously imprisonment undergo करते हैं. This is just a small running example. अब हम आगे चलते हैं. Elements of punishment. Punishment के क्या क्या elements होने चाहिए? हमारे jurist ने अलग अलग elements दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर हार्ट ने 5 एलिमेंट्स दिए. वो 5 एलिमेंट्स क्या हैं कि पनिशमेंट में पेन होना चाहिए. अगर दर्द नहीं है तो कुछ भी ऐसा जो अनप्लेजेंट हो, वो क्या हो सकता है. यू कम फ्रॉम अ वेरी lavish background, you are awarded a punishment to work as a wager, earn your livelihood on day-to-day basis, and then certainly after that you survive. This is going to be extremely unpleasant for the one who was living under a very good lavish lifestyle. This was being a very good unpleasant feeling for you, which is kind of a pain which is you undergo. बाकी सजाओं में तो रिग्रेट है, या हमारे पुराने ज़माने में कैपिटल पनिशमेंट्स होते थे, पब्लिक हैंगिंग होती थी. दैट इज सर्टेनली पेनफुल. इट मस्ट बी एन ऑफेंस अगेंस्ट लीगल रूल्स. सर्टेनली कुछ कानून बने हैं, उन कानूनों की अवहेलना हुई है तो एक गुनाह हुआ है. उन गुनाहों की एवज में ही आपको एक सजा मिली है. किसको मिलेगी? एक्चुअल और सपोज्ड ऑफेंडर. एक्चुअल ऑफेंडर यहाँ पर वो माना जा सकता है जिसके वहाँ पर एक स्टार, एक आई विटनेस हो, लोगों ने देखा हो उसको गुनाह करते हुए. सपोज्ड ऑफेंडर इज अ वन, सर्कमस्टांसेस, हालात सो से दैट इफ गैदर्ड टुगेदर along with circumstantial evidence या corroborative evidence, तो आप एक सपोज्ड ऑफेंडर हैं. आपके खिलाफ ट्रायल चलेगी और आप एक पनिशमेंट के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा. Punishment must be intentionally administered by human beings other than offenders. जिन्होंने गुनाह नहीं किया है, जो गुनहगार नहीं है, वो जानबूझकर intentionally with the intent पनिशमेंट को, पनिशमेंट अवॉर्डिंग प्रोसेस या पनिशमेंट को एडमिनिस्टर करेंगे. किनके खिलाफ? जो क्रिमिनल्स या ऑफेंडर्स हैं. और इसको एडमिनिस्टर और इम्पोज कौन करेगा? एडमिनिस्टर और इम्पोज करेगा एक लीगल सिस्टम. लीगल सिस्टम पुराने ज़माने में इट यूज्ड टू बी राजास. Sometime it used to be certain officers of the king. Now we have a proper judicial process for everything. So here our legal system is the competent court of law.
हॉल जेरोमी कहते हैं अपनी किताब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ में कि पनिशमेंट कैन बी ड्रॉन विथ फॉलोइंग। पनिशमेंट इज़ अ प्राइवेशन, उसमें एक बुराई होती है, एक दर्द होता है और बेकदरी, डिसवैल्यू होता है। पनिशमेंट कोएर्सिव होता है, ज़बरन होता है, आप अपनी सज़ा खुद नहीं चुन सकते, कानून या एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड करेगा कि आपको क्या सज़ा मिलेगी। पनिशमेंट आपको स्टेट देगा, स्टेट को अथॉरिटी होती है गुनाहगार को सज़ा देने की। पनिशमेंट के पीछे चलते हैं, उससे पहले चलते हैं कुछ कायदे कानून, उनका टूटना या उनका वायलेशन, उनकी अवहेलना करना, आप डिटरमिन्ड हो ऐसा करने के लिए, और फाइनली एक जजमेंट होती है जिसमें आपको पनिश किया जाता है। पनिशमेंट किसके ऊपर दिया जाता है? पनिशमेंट हमेशा एक गुनहगार को दिया जाता है, जिसने एक गुनाह किया है वो सज़ा उसको दी जाएगी। Who is an offender who has committed a crime? सेट ऑफ वैल्यूज हैं। सेट ऑफ वैल्यूज क्या हैं? You are not supposed to outrage a woman's modesty. This is a value. From ancient immemorial times हमें बताया गया है कि महिलाओं की और बहनों की सबकी इज्जत करना। आप कुछ आपत्तिजनक बोलते हो तो ये एक इमोरल एक्ट भी है, गुनाह होने के बावजूद आपको उसके एवज में पनिशमेंट मिलेगा। रेफरेंस टू हार्म एंड पनिशमेंट आर डिफरेंस, कितना नुकसान हुआ उसके एवज में कितनी सज़ा मिलेगी, ये बहुत ही ज़रूरी है। कितना और किस तरह का एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ पनिशमेंट, ये कितना नुकसान हुआ है उससे जुड़े हुए हैं। इफ़ somebody is trespassed your house, trespassing के बाद में वो घर में चोरी करता है और घर में कुछ आपत्तिजनक कुछ महिलाओं की वीडियो बना लेता है, तो वो जितना हर्जाना हुआ है आपकी रेपुटेशन को, आपकी प्रॉपर्टी को, पनिशमेंट उसी ग्रेविटी में आपको दिया जाएगा। मोटिव और टेम्पटेशन हालांकि एविडेंस का हिस्सा है, मोटिव क्या है, उसके पीछे आपके क्या इरादे हैं, गलत इरादे हैं, वो बहुत मायने रखता है। पनिशमेंट इज फॉर ट्रांसग्रेशन ऑफ रूल्स बाय लीगली अथॉरिटी। आप रूल्स को ट्रांसग्रेस करो, आपको सज़ा मिलेगी। सज़ा आपको कौन देगी? ऑथराइज्ड बॉडी ऑफ पर्सन्स देंगे। नाउ कमिंग टू, you may always have a question on it, theories of punishment. You certainly should know कि theories of punishment क्या है। आपको एक illustration दिया जा सकता है कि tooth for a tooth, eye for an eye कौन सी theory of punishment है। ये theory of punishment किस section में आती है? section specifically theories को define नहीं करता है but elaborate करता है। section 53 is silent about theories, but that is needless to say, बिना कहे goes without saying, theories हैं। Retributive theories बहुत ही भयानक हमारी ये थ्योरी है। सिंपल है, वेंगेनेंस, बदला, बदले की भावना, इसका वजूद, इसका अस्तित्व रिट्रीब्यूटिव थ्योरी का यही है। पुराने ज़माने से आपने गलत किया है तो जब तक आपके साथ गलत नहीं होगा आपको एहसास कैसे होगा। वेंगेनेंस, रिवेंज, आप बदला ले सकें, इसी अनुभूति से ये थ्योरी बनी है। किसी ने आपको थप्पड़ मारा, जब तक आप उसको थप्पड़ नहीं मार सकते, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, किसी की हत्या नहीं की, हत्या कर दी, तो जब तक आप हत्या नहीं कर देते उसकी, खुद की या उसके अजीज़ की, आपका बदला पूरा नहीं होता। अ वेरी पेनफुल, अ वेरी इनह्यूमन थ्योरी एक्चुअली। आई फॉर आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। जो आपने मेरा नुकसान किया उसके बदले आपको वो भुगतना ही पड़ेगा। और सबसे हैरानी कर देने वाली बात
कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इंजर्ड, जिसको हानि हुई है, जिसको चोट पहुंची है, वही शुरू करता है कि उसको वेंगेनेंस करना है, उसको रिवेंज लेना है, और स्टेट का कोई मतलब नहीं होता इसमें। सो इन रेट्रिब्यूशन थ्योरी, in retributive theory, the criminal proceedings are initiated by the injured and not by the state. Mark my words, dear student, you may get a question where a injured becomes or commences the criminal proceedings against the accused and not the state. बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं हम, हमें समझ नहीं आता, बट वो थ्योरी है रेट्रिब्यूटिव। समय बीतता गया, मॉडर्न टाइम्स आए। मॉडर्न टाइम्स ने थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने कहा कि इससे दो पर्पस सर्व होते हैं। एक तो स्टेट, राज्य को शांति मिल जाती है कि गलत करने वाले या गुनाह करने वाले को सज़ा मिल गई है, या जिसके साथ गुनाह हुआ है उसको बदला मिल गया है। और सेकेंडली, कोर्ट, स्टेट देख लेता है कि पनिशमेंट दिया जा चुका है, कम से कम उतना जितना गुनाह किया गया था। तो सच्चाई वही है, थ्योरी वही है, बस एज दे से व्हाट इज लॉयर, व्हाट इज वर्ड, इट्स ऑल एक्सप्रेशन इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे वही रेट्रिब्यूटिव थ्योरी है। आप मेरा आँख फोड़ो, मैं आपकी आँख फोड़ दूंगा। यहाँ पे ये कहा गया है कि सर्टिफिकेशन ऑफ, आपके अंदर एवेंज, आपको सुकून मिल गया कि आपने बदला ले लिया, और स्टेट, राज्य ने देख लिया कि कम से कम उतनी सज़ा तो मिली जितना गुनाह उसने किया था। बेसिक एक ये भी है कि किसी को मॉरली ब्लेम वर्दी करना कि तुमने ये किया है, अब तुम्हारे साथ भी ये होगा, ये उसकी बेसिक बैकबोन है। बहुत ही इसकी निंदा की गई है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी की। शेल्डन ग्लूसिक ने की है, प्रोफेसर डॉक्टर H.S. गौर ने की है। और जो एथिकल अप्रोच है वो चली गई। एथिकल अप्रोच ये थी, अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ समय या हालात खुद गलत कर देंगे, पर यहाँ पर अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपके साथ मैं गलत करूँगा, ये चीज़ आ गई है। तो एक एथिकल अप्रोच दैट हैज़ मिसअपीयर्ड। To the best of my conscience, I totally disapprove, because there will be a state of chaos. Let us imagine there is a village, it has killed somewhere around dozens of people of another village. They all will come and kill here. Will that really give justice? No. Others will get aggravated, they'll get provoked, and there will be a complete state of pain with no sense of proportionate punishment. हम देखते हैं, बोलते हैं अक्सर, you dare not to do that, और you are deterred from doing that. वो है theory of deterrence. Theory of deterrence कहती है अगर आप कानून की अवहेलना करते हैं तो आप तैयार रहिए कि आपको सज़ा मिलेगी, और वो सज़ा कुछ इस तरह होगी कि हमारे जो प्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल्स हैं उनके लिए, या कोई कल को गुनाह करने का सोच भी नहीं सकता। प्रोफेसर होम्स ने बहुत क्रिटिसाइज किया है, कहा है टोटली इमोरल थ्योरी है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ। वी सी ऑफेंडर्स who very frequently appear before magistrates, तो deterrence of theory उनके सामने फेल हो जाती है। So this in present contemporary era is not a very good theory, especially in a country like ours where we don't really believe in deterrence. You are prevented from doing this act. You're prevented from jumping a red light. If you jump, your vehicle may be confiscated, your license may be punched, and such other and further things. Theory of prevention, preventive theory कहती है purpose of punishment is a preventive measure. गुनाह, सज़ा का डर इस तरह का होना चाहिए कि कोई और गुनाह करने की ना सोचे। प्रोफेसर सैलमॉन ने इसको इम्प्रूव किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम्स में, अगर आपने चोरी की है तो आपको हाथ ही काट दिया जाएगा, क्योंकि ये माना जाता था अगर हाथ ही नहीं होगा तो चोरी कैसे करेंगे।
डेथ पेनल्टी बहुत आमूमन होती थी, पब्लिक हैंगिंग्स होती थी। तो ये है प्रिवेंटिव थ्योरी, इसमें कि आने वाले में आपको कंप्लीटली प्रिवेंट किया जाता है कि इफ़ यू हैपन टू थिंक ऑफ डूइंग और कमिटिंग सच एक्ट, यू शैल बी subject to such and such punishment as this person has undergone। बहुत कन्विंसिव नहीं है क्योंकि समय बीतता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो साइकोलॉजिकल क्रिमिनल्स हैं उनको आप प्रिवेंटिव साइकोलॉजिकल और इन इम्प्रॉपर सेंसेस having some psychological issue, if he commits a murder, and while counseling he tells, I committed the murder because this person who is black in color whom I have killed, I saw in my video game that he had killed the princess and I was fearing कि ये जो princess है ये मेरी माँ है, कहीं उसको मार न देता। So can the preventive theory be of any significance? It would rather be a very bad example। ऐसे क्रिमिनल्स को जो साइको हैं उनको ज़रूरत है काउंसलिंग की। हार्म टू रेपुटेशन आमूमन ऐसा होता है जब आप एक सज़ा भुगत चुके होते हैं तो आपको, जैसे हम आमूमन कोर्ट की भाषा में कहते हैं, एक बार जो तिहाड़ जला गया उसको सब डर ख़त्म हो जाते हैं। तो हार्म टू रेपुटेशन से यहाँ तात्पर्य है आपको लगता है मेरे ऊपर एक बार धब्बा, एक बार इल्ज़ाम तो लग ही गया है, तो आगे भी अगर मैं जेल जाता रहूँ या कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमा चलता रहे तो मुझे कोई अब चिंता नहीं है, समाज में जो इज्जत खराब होनी थी वो तो हो ही गई। अब आती है एक और हमारी थ्योरी जो कि चौथी थ्योरी है, एक्सपिएटरी थ्योरी। एक्सपिएटरी थ्योरी कहती है कि क्रिमिनल की प्यूरिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है, उसका मन साफ, आत्मा साफ होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपिएशन यानी कि आपने जो गुनाह किए हैं पनिशमेंट कुछ इस तरह दिया जाए कि आप बिल्कुल आगे से प्योरीफाई हो जाएं। हमारे मनु कहते थे, मनु पुराण में, कि men who are guilty of crimes when condemned by the king, उनकी आलोचना, उनकी त्रुटि करता है राजा, तो वो जिन्होंने गुनाह किया है वो एकदम से शुद्ध हो जाते हैं और वो स्वर्ग में जाते हैं। वी आर नॉट गोइंग बाय द वर्ड्स हेवन हियर, because when it comes to actual trial in penal law these words are really of no significance, but still Manu said, और एक समझदार आदमी जिसको वर्चू हो वो अक्सर ऐसा ही करता है, तो आपकी शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। हिंदू जूरिस्ट कहते हैं हमने सारे एक्सपिएशन और पिनक के थ्रू, यानी कि जो सज़ा में मिल चुकी है उस सज़ा के थ्रू हमारे सारे पाप धुल गए हैं। देखिए हम एक्सपिएशन से यहाँ का क्या समझें। एक्सपिएशन सिंपली मीन्स, पिनक सिंपली मीन्स रेपरेशन, अटॉनमेंट, अमेंडमेंट करना, बदलाव करना। तो इससे एक सज़ा के तहत जब सज़ा मिलती है उसके तहत आपकी शुद्धि हो जाती है। There are different views. Professor Fry says, you may again get a question, कि Professor, who said it? Punishment should be in order to adjust the suffering of the sin. Who said it? Professor Fry said it. कॉलर कहते हैं कि एक punishment एक antidote है for the misdeeds. Salman कहते हैं punishment is to pay a debt due to the law that has been violated. आपने गुनाह की अवहेलना की, अब आप कर्जदार हैं, समाज और स्टेट के तहत आपको वो वापस करना ही पड़ेगा। वो वापस कब होगी? जब आपको किसी न किसी तरह से कोई सज़ा से गुजरना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। जो सैलमन के वर्ड्स हैं इसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है और पूछा जा सकता है हु सेड दिस इन अ MCQ। क्रिटिसिज्म है, सर्टेनली जूरिस्ट जहाँ एक थ्योरी को सपोर्ट करते क्रिटिसिज्म है। पहली बात तो कोई तराजू नहीं जिसमें हम तोल सकें किसने कितना तकलीफ़, कितना दर्द सहा है। इसको मापने का कोई स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला भी नहीं है, और क्राइम है वो मॉरल स्टेज पे जज हो सकता है बट उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट एक्सपिएटरी इज़। वी हैव क्रिटिसिज्म दैट यू कैन नॉट जस्ट कैलकुलेट द सफरिंग्स। फाइनली रिफॉर्मेटिव, restoring back the value of a man to the society, make him a good citizen.
उनको जेल में कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स करवाए जाते हैं ताकि वो आगे अगर बाहर निकले समाज में एक बेहतर इंसान बन के निकले. इट्स बिलीव्स जस्ट इन रिफॉर्मेशन. बट जैसे वी हैव TCJs, वी हैव TJs, तिहाड़ जेल स्टोर्स. उसमें जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो ईडेबल सम वेयरेबल मटेरियल्स बनाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जूट बैग टू जूट मैट, खाने के लिए मिठाइयाँ, कुछ तोहफे, ताकि वो समाज में आगे बाहर निकलें तो उनको पता हो हम ये काम सीख गए हैं. अगेन हर थ्योरी की तरह इस थ्योरी का भी ड्रॉबैक है विच सेज व्हाट अबाउट हैबिचुअल क्रिमिनल्स. हैबिचुअल क्रिमिनल्स को आप रिफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि वो उस समय में भी कुछ न कुछ गुनाह कर देंगे. जो मैंने आपसे उस जुवेनाइल का केस डिस्कस किया था. और कुछ इंसान कभी सुधरना ही नहीं चाहते, उनके ऊपर रिफॉर्मेटिव थ्योरी कभी लागू नहीं होगी. फॉर देम क्राइम इज अ हैबिट, क्राइम इज अ हॉबी एंड दे कैन नॉट ओवरकम इट. कुछ इंसान अगर उनको बहुत कंफर्ट दिया जाए तो सोसाइटी और फैमिली के लिए एक अच्छा माहौल नहीं रहने देते. सो दे से theory of reformative punishment fails entirely for habitual or hardcore criminals. Certainly it works for juvenile or young offenders or sometimes sexual offenders, but it fails entirely for habitual or hardcore criminals. So my dear students, this was an introduction, a major discussion of nature, characteristics and various elements of punishment. What all is a punishment? Section 53, capital, life, forfeiture, attachment and fine we shall discuss in our next class. With this, I wish you a very good, happy preparation. Enjoy yourself. Best of luck. Thank you.